Assalamu alaikum ji, viewers. A very good morning from rainy Islamabad and a little humid Islamabad today. And especially जब मैं कराची की आजकल तस्वीरें देख रहा हूँ और जहाँ से मेरा ताल्लुक है, मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है हमेशा कराची को डूबते हुए इन इस दौर में, इन हालात में। एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ जितना पानी आ जाता है, खड़ा होता है, तो बड़े लोगों की सफरिंग नज़र आती है। और थोड़ा सा मैं, क्योंकि मस्ती करने की भी आदत है, लोगों को छेड़ता भी हूँ, लेकिन नेचुरली कराची लिव्स इन मी। आई कांट सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम कराची. इट्स बीन 20 years that I'm living here in Islamabad, but कराची ऑफ कोर्स उसके लिए दिल धड़कता है और दिल दुखता है. तो कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं. फेलियर फेस्टिवल के हवाले से कुछ लोगों ने सवाल पूछे कि जी फेलियर फेस्टिवल क्या है. द वंस हु नो अस, द 1600 प्लस पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग अस फॉर द लास्ट 3-4 years, 5 years, तो उनको तो पता है. लेकिन नए लोगों के हवाले से कुछ सवाल है लोगों के जहनों में, वो बताना मैं ज़रूरी समझूंगा. Failure festival, how can we celebrate failure? How can there be a festival about failure? So उसका मकसद ये है, उसकी definition ये है कि there's this gentleman in Illinois, USA, and he's been doing the failure festival for the last 40 years actually. And जस्ट लाइक TEDx, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन को बताया जाता है कि जी फेलियर्स क्या हैं. जो स्पीकर्स आते हैं, दे टॉक अबाउट द फेलियर्स. Although it's a taboo, not just in Pakistan, but in the West also, people don't want to share, they don't want to talk about the failures. We want to keep quiet on our failures. लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें पता चला, मुझे पता चला जब मुझे बुलाया गया एज a speaker, there's nothing wrong in talking about your failures. It's your past life. And inspiration and motivation इससे कैसे आएगी? वो यूँ आएगी कि when you talk about your failures to people and tell, especially if you're a celebrity, if you are a writer, if you're a poet, if you're a thinker, आप शायरी करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तो और अगर आप कहीं पहुंच गए आज के दौर में, लेट्स से पीपल आर फॉलोइंग यू, यू हैव सब्सक्राइबर्स, इट इज़ नेचुरल पीपल वुड वांट टू नो कि जी आप कैसे पहुंचे वहाँ तक. क्या सब कुछ अच्छा था? क्या सारी लाइफ में सक्सेसेस थे? नहीं. तो हम सब के फेलियर्स होते हैं. तो क्यों ना ये लोगों को बताया जाए, स्पेशली यंगर जनरेशन, कि फेलियर्स अगर आते हैं लाइफ में, आने चाहिए, जिससे हम सीखते हैं. तो तालीम से भी सीखते हैं, घूमने से सीखते हैं, या किताबें पढ़ने से सीखते हैं, तो फेलियर सिखाते हैं. और उससे ये होता है कि जैसे कहते हैं एक हदीस शरीफ भी है कि मोमिन एक सुराख से बार बार या दोबारा नहीं डसा जाता. अगर आपको एक जानवर ने डस लिया है, एक सुराख से आपने इसमें उंगली डाली थी, तो नेचुरल है कि आप दोबारा उसको नहीं डालें. आग से आपका हाथ जल गया है तो आप दोबारा बचेंगे उस आग में हाथ डालने से. तो ये वो फेलियर्स है जो हमें लाइफ में सिखाते हैं कि किस तरह अब हमें इनसे बचना है और आगे बढ़ना है. बिकॉज यदि फेलियर्स को हम लेके बैठ गए अपनी ज़िंदगी में, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे. इसी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं. आज जिस मेहमान को हमने तकलीफ दी और मदद किया है अपने प्रोग्राम में, उनका नाम है मिसेस मदीहा हनीफ. और इत्तेफाक से उनके नाम की स्पेलिंग है वो मैं हमेशा गलत लिखता हूँ for whatever strange reason. But coming back to Madiha Sahiba, she has a master's degree in English literature and a bachelor's in fine arts. She's a potter, an artist, a poet, and a writer. She's an educationist by birth. She's taught different levels internationally and nationally, from early childhood education to university teaching and learning. Being head of the City School Lane campus to working as a creative consultant for USAID projects to supplement learning and teaching techniques, making both fun and enhance the horizon for students and teachers' experience. She is the CEO of a club of a group called Leaguelings, which is based on only one thought. And as per her,
This thought is, अपने मन में डूब के आजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. आइए वेलकम करते हैं मिसेस मदिया हनीफ साहिबा को. मदिया साहिबा, थैंक यू for joining us. The stage is all yours. Janab. Good afternoon. I can see you're enjoying your tea. And okay, so should I start talking about failures? The Big Please Bang? go ahead. Please go The ahead. Big Bang? Okay. Big Bang, the meteor shower, the 50 ton or 500 tons of debris on Earth. So nothing came into being beautiful without a disaster. So whether I'm a beautiful disaster or not, that I leave on you. But I would start from the first rejection, which was in my early childhood, and that was, "Acha, tum Anna ki tarah ho?" School mein, because my mother was a teacher, not a teacher, actually a professor in PECHS school. I come from Karachi as well. We've been living here in Islamabad for the past 22, 23 years now. And yes, when I was young and aspiring, so pehla disaster, pehla rejection, school se hi, कि अच्छा तुम मिसेस इमाम की बेटी हो, अच्छा तुम आमना की बहन हो. Why? Because I was not a scoring student. और आमना जो थी वो तो हमेशा टॉपर थी. तो पहला रिजेक्शन ये, फिर दूसरा रिजेक्शन स्कूल का ही कि there was this drama that was to be staged in PAMCA Karachi, and मैंने उसके लिए ट्रायल दिया और मुझे ये कहा गया कि तुम्हारा तो रंग साफ नहीं है और तुम तो सांवली सी हो, तो स्टेज के ऊपर जाओगी तो लाइट का अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा. सो हमारी क्लास में एक बहुत ही गोरी सी लड़की थी, उसको चुन लिया गया, मुझे नहीं चुना गया. फिर I was a debater and everything, और जहाँ पे हमें सिखाया गया था कि you have to bend through logic and not through your raised voice. तो यूनिवर्सिटी में आए तो ऑडिशंस हो रहे थे डिबेट के, और डिबेट्स के लिए मुझे जाना था, ऑडिशन देना था एक साइंस डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के. आई वेंट देयर और मैंने अपना ऑडिशन दिया. तो मुझे कहा गया कि तुम तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, बहुत पोलाइट हो, तो तुम डिबेट कैसे करोगी. हालांकि अब तक मेरे सीवी के ऊपर, यानी कि यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से पहले मेरे सीवी के ऊपर बहुत सारी एक्कोलेड्स जमा हो चुके थे. स्कूल के ज़माने से ही डिबेटर और बस में उर्दू अदब की हेड, और उसके बाद फिर IUCN के लिए पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में always taking accolades, topping over there. Then I was also acclaimed second best speaker of Pakistan at the Naval Club, जो कि मनोरा नेवल बेस के ऊपर हुआ करता था हर साल. अब मुझे नहीं पता कि अब होता है कि नहीं. अच्छा जी, ये तो रही वो बातें जो हमारा मुआशरा हमें देता है. हमें आस पास से रिजेक्शंस मिलते हैं, डिस्करेजमेंट्स मिलते हैं, हम उनको फाइट करते हैं अपने अंदर भी. लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे अंदर कहीं बस सी जाती हैं. तो जब थोड़े से बड़े हुए तो शादी का वक्त आया और अम्मा ने या खालाओं ने रिश्ते देखना शुरू कर दिए. तो खाला ने सबसे पहले अम्मी से कहा, अरे ये तो सांवली है, इसको कैसे अच्छा लड़का मिलेगा. तो अच्छा जी, अब मैं सांवली हूँ तो मुझे अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मेरी कोई अपनी अच्छाई या और मेरी जो काबिलियत है वो शायद किसी लायक नहीं थी. बहरहाल अच्छा लड़का मिल गया. तो लेकिन एक अंदर एक खौफ, एक डर सा ना कि शायद अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा भाई हमें. उसके बाद
उससे पहले जब ये बातें सिलसिले चल रहे थे एंड आई वाज अबाउट 17 years old, तो एक ड्राइविंग इंसिडेंट में I was about to go and pick up my sister. She was giving exams for the civil services. तो I was driving और गाड़ी बार बार गर्म हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था. तो आपने होंडा मोटर्स का एक देखा होगा, बहुत बड़ा सा शोरूम है शारई कायदीन पे, नहीं एयरपोर्ट से जो आगे पीसीचेस जाती है रोड, शारई फैसल, शारई फैसल में. तो यू नो वी स्टॉप्ड ओवर देयर. मैं और अम्मी थे गाड़ी में और हमने पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ नहीं, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसमें रेडिएटर में पानी डालते, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन इट. तो अच्छा ठीक है. जब वहाँ पहुँचे जहाँ एग्जाम था मुनाफा का, तो मैंने कुछ सोचा नहीं. आई वॉज यंग एंड यू नो आई वॉज द ओनली पर्सन. अम्मी को तो कुछ आता नहीं था, अम्मी मेरी ड्राइव भी नहीं करती थी. तो मैंने रेडिएटर खोल दिया और रेडिएटर की पूरी स्टीम जो निकली तो माई होल फेस वॉज बर्न्ड एंड पेन बरतरफ. जो दर्द था वो एक अपनी जगह, लेकिन एक 17 साल की बच्ची का पूरा चेहरा जल जाना, you know, that was the prime of your age, prime of your beauty, and you know you are thinking that you are above the world and you पता नहीं अपने आप को आप वो सब क्या समझ भी रहे होते हैं और होते भी हैं. यूथ होता ही ऐसा है, खुमार में रखता है. तो लोग जो भी कहते थे, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं अच्छी खासी ही हूँ. तो जब मैं जल गई तो दर्द 3 दिन तक जो दर्द रहा, जो पेन किलर्स दिए गए और जिस तरह मुझे सुलाया गया, और फिर एक अम्मी ने आकर मेरे कमरे में ड्रेसर के ऊपर, आईने के ऊपर कपड़ा डाल दिया ताकि मैं अपनी शक्ल नहीं देख सकूं. मैं बहुत रोई और मैं बहुत अल्लाह ताला से खफा हुई. और मैंने अभी भी यू नो व्हेन आई थिंक अबाउट इट तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं. और मैं अल्लाह ताला से बहुत खफा हुई और मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, आई मीन मैंने क्या किया है आपका, व्हाई डू यू डू दिस टू मी. एंड यू नो आई वेंट टू स्लीप एंड जस्ट अबाउट फजर टाइम मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, यार face is one part of your personality. What about the brain that you have, you know, in abundance? And alhamdulillah, I'm blessed. So, you know, at that moment was the moment of realization. And that was the moment of gratitude. And I woke up, I said namaz, and I thanked God. कि सबसे बड़ी चीज़ इंसान की क्या है? उसका दिमाग काम कर रहा है, उसका दिल काम कर रहा है, वो चल रहा फिरता है. मुझसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके शायद उनको ये चीज़ें भी नसीब नहीं होंगी. So you know, that was the time my first success came, because that was the time when I truly realized कि मैं खुद क्या हूँ और मेरी जिंदगी में उस मालिक की क्या अहमियत है. So that was the biggest gift that I got from a biggest loss. लेकिन थोड़े ही अरसे बाद वो सुपरफिशियल बर्न था. बेशक पेन बहुत ज़्यादा था, सब कुछ था, बट विद ट्रीटमेंट एंड डॉक्टर्स की काउंसलिंग और सारा कुछ करते करते यू नो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट अवे. उसके बाद निकाह हो गया और उस वक्त मैं मास्टर्स में मैंने एडमिशन ही लिया था. तो शादी का वक्त भी आ गया. अब शादी का वक्त आया तो फिर ये था कि मास्टर्स किस तरह कंप्लीट किया जाए. तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आपके साथी का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी था. So Arsalan was on this page, my husband, कि मुझे मास्टर्स तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास क्योंकि वक्त बहुत कम था, क्योंकि अरसलान को स्कॉलरशिप मिल गई थी और उन्हें भी बाहर जाना था, और मैं कराची यूनिवर्सिटी को छोड़ के और फिर यू नो हमारी पोस्टिंग हो गई थी बलूचिस्तान में, तो मुझे कोयटा में एग्ज़ाम्स देने थे.
So it was just the first month of my marriage, और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की क्योंकि मई में एग्जाम्स होने थे और बाय द एंड ऑफ दैट ईयर हमें चले जाना था. तो प्रिपेयर तो मैं कर ही रही थी, लेकिन शादी के साथ और अकेले रहना, और ना ही सिर्फ अकेले रहना बल्कि वो तमाम बैगेजेस जो हमारे यहाँ शादी में होते हैं, घर का ख्याल रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ससुराल का ख्याल रखना, अम्मी अबू को पूछते रहना, और अगर ये ना किया जाए और तो कहा जाता है कि ये तो अब हमारी बच्ची नहीं रही है, और ससुराल वालों के अलग इश्यूज होते हैं. उनको होता है कि भाई अब शादी हो गई है तो बच्चे होने चाहिए और फैमिली को बढ़ना चाहिए. तो बच्चे तो खैर ये एक और कहानी है. सो हियर जब एग्जाम्स का वक्त आया तो अरसलान ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे जो जहाँ सेंटर बना है वहाँ मैं आई टॉक टू द प्रिंसिपल कि वो तुम्हें थोड़ा सा लेवरेज दे दें. अच्छा, आई टोल्ड हिम आई डोंट वांट एनी लेवरेज बिकॉज व्हाट आई नो and that's how I'm going to perform. But he being overprotective, he went to the principal and he said कि इसको थोड़ा सा leverage दे दीजिएगा. अब she got extremely angry at that, और उन्होंने मेरा she made sure कि मेरे हर पेपर के ऊपर वो कुछ जो है ना रिमार्क्स चले जाते थे और कुछ ना कुछ. अच्छा, ये करते करते हुआ ये कि मैंने खैर तमाम पेपर्स दे दिए, 10 के 10 पेपर्स दे दिए, और उन्होंने ये किया कि एक पेपर में मुझे उन्होंने कर दिया फेल. और वो कौन सा पेपर था? थीसिस का पेपर था. बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने मुझे थीसिस के पेपर में, जो हमारे ऐसे राइटिंग का होता है और हमारा थीसिस होता है और उस पर बहुत मेहनत होती है, और मैंने बहुत मेहनत की थी और इस बात का मुझे पता है, लेकिन क्योंकि वो मेरे हस्बैंड से अड़ गई थी और उन्होंने कुछ रिमार्क्स दे दी और वो मैं फेल हो गई. अच्छा, बाकी में मार्क्स नॉमिनल से ही आए. अब हम अमेरिका चले गए तो मेरे पास डिग्री तो अभी नहीं थी क्योंकि हम रहे नहीं थे डिग्री के वक्त तक. वहाँ गए तो वहाँ सारे दिन अकेले रहना और बस इंतज़ार करना और घर की देखभाल करना. एंड आई वॉज नॉट ब्रॉट अप दैट वे. हमें शुरू से सिखाया गया कि छुट्टियां भी हों तो आपने या तो पेंटिंग सीखनी है या कढ़ाई सीखनी है या लिखें, या हम जब बहुत छोटे से थे तो हम लाइब्रेरी, हम चारों बहन भाई खोल लिया करते थे समर वेकेशंस में, और उसमें हमारे मोहल्ले के रिश्तेदार और हर तरह के बच्चे बड़े आके हमसे बुक्स बोरो किया करते थे. और अगर कोई डिले कर देता था वापस करने में तो हम उनको बाकायदा फाइन भी चार्ज किया करते थे. और उस लाइब्रेरी का नाम हमने रखा था तालिब लाइब्रेरी. मेरे दादा का तखल्लुस था. सो एनी हाउ, अब यहाँ पे हम अमेरिका पहुँचे और अमेरिका में और कुछ करने को नहीं था सिवाय घर की देखभाल करूँ या उन पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ मस्जिद में बैठ के या इधर उधर बैठ के गपशपें लगाऊँ और गॉसिप करूँ. एंड आई वाज नॉट लाइक दैट. सो अब क्या करूँ, और बच्चे भी नहीं थे, तो सोचा कि जॉब कर लेनी चाहिए. अब जॉब के लिए मैं गई तो सबसे पहली जो मुझे रिजेक्शन मिली वो जॉब के हवाले से वो मेरे अपने हस्बैंड की थी. उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे जॉब मिलेगी नहीं और तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती. बहरहाल बड़ी हिम्मत की और कहा कि नहीं भाई, मैं तो जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि कैसे, नहीं मतलब लेट मी एटलीस्ट ट्राई. सो पास में एक मॉल था और मॉल में हार्डली दो शॉप्स पे गई होंगी. दैट वाज अ डायमंड ज्वेलरी. डी बेयर्स की एक शॉप थी और एक और थी जीना की. तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने फौरन हाथों हाथ लिया, मुझे रख लिया, लेकिन इट वाज क्वाइट फार ऑफ. तो मैं ड्राइव नहीं करती थी तो मेरे लिए आना जाना ज़रा मुश्किल होता था. सो कुछ महीने वहाँ जॉब की और उसके बाद फिर सोचा नहीं, घर के आसपास ही देखना चाहिए. तो A&M यूनिवर्सिटी टेक्सास का चिल्ड्रन सेंटर था वहाँ पर. A&M यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे और उन्हीं का चिल्ड्रन सेंटर था. एक स्कूल था जो वहाँ के स्टूडेंट्स और उनकी टीचर्स और उनके बच्चों के लिए खोला गया था. So I went there for the interview and I talked to the directress and she simply asked me a few questions and apparently she liked me very much and she said, how soon can you join us? And I told her tomorrow.
And you won't believe it, as soon as I went home, अभी मैं लॉक खोल रही थी अपार्टमेंट का और अंदर से फोन की मुस्तकिल घंटी बज रही थी. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अच्छा अम्मी का फोन होगा, अम्मी का फोन होगा, जल्दी जल्दी लॉक खोलूं मैं. सो मैंने लॉक खोला तो फोन उठाया एंड इट वाज A&M यूनिवर्सिटी चिल्ड्रंस सेंटर एंड दे आस्क्ड मी कि प्लीज जॉइन अस फ्रॉम टुमारो. सो यू नो फ्रॉम एवरी रिजेक्शन आई गॉट समथिंग बिगर. अच्छा अब ये हो गया और पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पर. वहाँ पर भी बहुत अपनी किस्म के रिजेक्शंस थे और डिस्करेजमेंट्स थी. स्पेशली टेक्सास इज नोन फॉर इट्स एथनिक बायस. सो वहाँ पर भी कुछ टीचर्स भी फिर देन एक मैं मुसलमान थी तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ और मज़ाहिब के लोग और फिर वहाँ पे अपने जो उनके अपने लोग थे उनका भी कि कहीं ना कहीं वो तलाश करते थे कि मैं कोई गलती करूं और वो जाके जो है मेरी कंप्लेन करें और मुझे आउस्ट किया जाए. तो मैं गलती क्या करती, मैं 21 साल की 22 साल की लड़की ही कहूँगी उस मासूम इस वजह से क्योंकि गालियाँ नहीं इस्तेमाल करती थी और अब्यूसिव भी नहीं थी और अब्यूसिव भी नहीं थी, गालियाँ भी नहीं देती थी और बच्चे मुझे वैसे ही बहुत पसंद थे और मेरा हमेशा से दिल चाहता था कि बच्चे हो तो ढेरों हो ताकि यू नो एक मेला सा लगा रहे. तो मुझे तो बच्चे मिल गए थे तो मेरे लिए तो इससे अच्छा वक्त और कोई भी नहीं था. एक दफ़ा हुआ ये कि एक और क्लास टीचर थी वो शी वाज सेंट टू माय रूम टू ऑब्जर्व एंड उन्होंने जाके इट वाज lunch hour and I was supposed to leave for lunch and she was supposed to pack up and lunch के बाद वो बच्चों को the early year children need to be put to sleep. So and then she had to clear up the room. So मैं जब वापस आई हूँ लंच से तो बच्चे भी जाग रहे थे और क्लियर भी नहीं हुआ था रूम. So I just asked her तो उन्होंने आगे से पता है मुझे कहा क्या आपने क्या वर्ड यूज किया कुछ फूलिश करके या कुछ ऐस करके आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया और मैंने सुना है. और जिस एतमाद से उसने ये बात की और जिस तरह उसने मुझे डराया और मैं खुद सोच में पड़ गई क्योंकि खुद एतमादी इतनी थी नहीं थी, दूसरा मुल्क भी था, अकेलापन भी था और कोई साथ भी नहीं खड़ा था. तो मैं भी तो मैंने सोच में अच्छा मैंने ये कहा है, कब कहा, किसको कहा? नो आई हर्ड. एंड देन जो मेरे बराबर वाले क्लासरूम की टीचर थी तो and by the way she was a clergy too तो उन्होंने वो भी उनके साथ मिल गई और उन्होंने कहा हाँ हमने सुना. I said okay चलें ठीक है आपने सुना होगा. Then I did not complain about her पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या. Then I was like about to leave the school. हम मेरा वर्क परमिट भी ख़त्म हो गया था. It was time for me to go home, go to Pakistan. तो मुझे डायरेक्ट्रेस ने बुलाया. डायरेक्ट्रेस ने बुलाया और उसने मुझे कहा कि मदीहा यू आर द फर्स्ट वन जिसके जाते हुए मुझे बहुत सारी टीचर्स और बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि इसको ना भेजें, इसको रखे रहें यहाँ पर. ऑल्दो तुम्हारी रिटन कंप्लेंट्स हैं मेरे पास बट आई ऑब्जर्व्ड यू एंड आई ऑब्जर्व्ड कि आप में कितनी इंटेग्रिटी है और आपने कितने अच्छे से सब बच्चों को प्यार इक्वल दिया और उनको पढ़ाया. एंड देन देयर वाज दिस पेरेंट हु वाज लिटरली क्राइंग. उनके बेटे में थोड़ा सा फिजिकल कमी थी उनके बेटे की, वो थोड़ा प्रॉपर चल नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था. तो he came and he hugged me and he said where are you from and why are you going back. So you know ये रिजेक्शंस ने मुझे बताया कि सच्चाई हमेशा विन करती है. उसके बाद जो बहुत बहुत सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का खला था या रिजेक्शन था क्योंकि
ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم ہر وقت ہی ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. جب میرا نکاح ہو چکا تھا تو میرے دیور کی شادی ہو چکی تھی, اور اس کی بیوی گوری تھی, تو میری اپنی ہی ماں نے مجھے بولا تھا کہ مدھیا وہ تو بہت خوبصورت ہے, ایز اف I'm not, you know. So وہ ایک تھوڑا سا وہ کمپیریزن, اس کے بعد پھر ان کے بچے پہلے ہو گئے, اور میرے بچے ابھی تک نہیں تھے, اور اب شادی کو 3 سال گزر چکے تھے. ہر وقت کی مایوسی اور ہر وقت کا ڈپریشن, اور لوگوں کا ساس کہتی تھیں کہ فلانے کی دوسری شادی ہوئی تو ان کے یہاں پہلی سے بھی بچے ہو گئے, اور نند کچھ اور کہتی تھیں, اور ہسبینڈ ہر وقت ناراض رہتے تھے, جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں ہو کسی کو زندگی دینا. تو it was my life's biggest struggle. You have a glass of water with you? Yeah, it's okay. So وہ ہم معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ہم کسی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کہہ کیا رہے ہیں, کیا کسی کا نصیب وہ خود بنا سکتا ہے, یا ہمارے ہاتھ میں زندگی لینا ہے, دینا ہے کسی کو. سو بہرحال یہ میری بہت بڑی اسٹرگل تھی جو 7 سال قائم رہی. ہر جگہ ڈاکٹرز کو دکھایا, لاہور, امریکہ, کراچی, اسلام آباد, فرٹیلٹی سینٹرز گئے. سب نے کہا مدیحہ یو آر جسٹ فائن, یو آر پرفیکٹلی فائن, دیر از نتھنگ رانگ ود یو, کسی چیز کی تم میں کمی نہیں. لیکن ان کو میں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ جس قسم کی کمی میں محسوس کر رہی ہوں, یا جس قسم کی محسوس کروائی جاتی ہے کمی, وہ آپ کی جان ہی لے لیتی ہے. تو کرتے کرتے ڈاکٹر سعد رانا یہاں اسلام آباد میں, he said you are perfectly fine. I went to him for insemination and he said you are just perfectly fine. تم ایسا کرو مدھیا کہ تم بہت انٹیلیجنٹ لڑکی ہو, تو کچھ پڑھنا شروع کر دو, کچھ ایسا کام کرو جس کا تمہارا دل چاہتا ہے. So I started learning French and I started swimming, and within 2-3 months I conceived. And then things again, چھوٹی چھوٹی باتیں, اپنے آپ کو کم سمجھنا, اپنے آپ کو مجبور سمجھنا. So it went on and on and on, and then I got a very good opportunity in Shifa Medical College over here in Islamabad, where they called me themselves because they got to know about me. And اچھا, ان باتوں میں ایک چیز بھول گئی کہ جب انہوں نے مجھے تھیسس کے پیپر میں فیل کر دیا, میں امریکہ سے واپس آئی, میں نے پھر اپلائی کیا, اور میں اس دفعہ اکیلی گئی اور میں نے جا کے تھیسس کا پیپر دیا. اور شیخ صاحب آپ بلیو نہیں کریں گے, میں نے تیاری نہیں کی تھی, وہی تیاری تھی جو پچھلے 2 سال پہلے میں کر چکی تھی ایگزام کی. اور وہی تھیسس جب آیا, اور اس پہ ڈرامے پہ تھیسس تھا میرا, اور جب رزلٹ آیا شیخ صاحب, تو آئی گاٹ 98 marks out of 100 this time. So پھر میری ڈگری مل گئی مجھے الحمدللہ. اینڈ دین جو میرے آس پاس دوست تھے یہاں پر, اور جو تھوڑی بہت میری کیا کہنا چاہیے کریئر بلڈ کیا تھا, کہ ایک اسکول میں پڑھایا تھا یہاں سے آنے کے بعد, امریکہ سے آنے کے بعد جو ہماری اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی, اس کے بعد ایک یونیورسٹی کو جوائن کیا, تو وہاں پہ بھی انٹرویو میں تم اتنی چھوٹی سی ہو, تمہارے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے, تم کیا پڑھاؤ گی. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ایکسپیرینس دیں گے تو میں پڑھا دوں گی. اور یہ بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا, پھر بچے ہو گئے, پھر وزٹنگ تھوڑا سا کرتی رہی, بہرحال سب کچھ بیچ میں معاملہ چھوٹ گیا. سو اس کے بعد یہ اپارچونیٹی آئی تھرو اے فرینڈ.
جو ہیڈ تھیں اس وقت شفا میڈیکل کالج کی, وہ میری دوست کی دوست تھیں, اور وہ دے ور لوکنگ فار head of English department and for the medical college, and they proposed it to me. I said, wow, I mean, ghar baithe agar aapke paas aisi opportunity aa jaye to who would like to leave it? So I went there, اور انٹرویو ہوا, اور اسی وقت مجھے لیٹر مل گیا کہ آپ جوائن کر لیجئے. انہوں نے میرے لیے, کیونکہ میرے 2 بچے ہو چکے تھے اور چھوٹے تھے, اور آف کورس میرے یہاں پر کوئی اور خاندان کی ہیلپ نہیں تھی, بیکاز ایوری ون از ان کراچی. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے وقت بہت اہمیت رکھتا ہے, تو اگر آپ مجھے 9 سے 2 کا ٹائم دے دیں تو آئی کین ایزیلی جوائن, ادروائز دین آئی ہیو ٹو ری تھنک. سو میں نے شفا جوائن کیا, بچوں کے لیے ایک میٹ کو رکھا, پر آپ کو پتہ ہے میٹس کے تو کچھ نہ کچھ چلتے ہی رہتے ہیں ایشوز. سو وہ جاب چھوڑ دی, وہ سب کچھ چھوڑ دیا. اب آگے کیا, اب آگے یہ کہ when was this? What year was this? this was about almost 13 and a half years ago. جب میرے چھوٹے والے پیدا ہوئے تھے, he was hardly 2 months 3 months old at that time. So خیر یہ ہوا. اچھا, تو وہ بھی کیریئر بھی بیچ میں ختم, لیکن میں نے سوچا ٹھیک ہے, شاید میں فل ٹائم کیریئر نہیں پرسو کر پا رہی, تو میں وزٹنگ کرتی رہتی ہوں. So I kept visiting with Hamdard University, with Zebist, with 2 to 3 more universities. پر اس میں یہی تھا کہ جب ارسلان ہوتے تھے گھر پہ تو میں جا کے اور 1 گھنٹے کا لیکچر دے کے اور پھر گھر آ جاتی تھی. اچھا, سول سرونٹ کی وائف تھی اور سرکاری گھر میں رہتے تھے, تو ایک جو صرف میرا فیلئر نہیں تھا, بیسیکلی وہ فیلئر گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم جہاں رہتے تھے وہ کسی اور کو الاٹ کر دیا گیا وہ مکان, اور وہ کافی اثر و رسوخ والے آدمی تھے, اور وہ one fine day he sent few people to throw our stuff out. And that time, I mean that day I said, یار کیا پاکستان میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے کیا؟ انسان تو چلیے خیر انسان ہی ہے, سارے ایکول نہیں ہوتے, سم آر مور ایکول دین ادرس, لیکن مطلب ایک ہی نوکری میں ہوں لیکن کیونکہ ایک بڑا پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہے اور دوسرا نہیں ہے, تو کتنی آسان ہے کسی کے لیے بھی یہ سب کر دینا کسی کے ساتھ. So that day I went to Lashari, I talked to him and I said, how could you even do this? And you know, he was kind enough and he took back the orders, and ہم اس مکان میں ابھی آخر وقت تک رہے جب تک ارسلان نے نہیں نوکری چھوڑی. لیکن اس وقت میں نے یہ ریئلائز کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, اسپیشلی ان پاکستان. تو اس وقت صرف میں نے ہی نہیں, ارسلان نے بھی یہ بات ریئلائز کی کہ who are we and where do we stand. So you know, this failure also brought us where we are today. He left the job, I started working, اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اوپر ہی لیتا چلا گیا, and now we over here, ابھی میں انٹرویو اپنے گھر سے ہی دے رہی ہوں. سو الحمدللہ. بٹ ان ساری باتوں میں ارسلان کا رویہ بھی بہت بدل گیا, اب وہ بہت الگ انسان ہے, اب وہ بات کرتے ہیں. لیکن ان ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ سے کی, ان میں 2-3 بہت نمایاں باتیں ہیں. لیکچر میں نہیں کرنا چاہتی لیکن میں اپنا ایکسپیرئنس ضرور بتانا چاہتی ہوں. ایک جو بہت بڑا لاس ہوتا ہے کسی بھی انسان کا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, خود کو نہ پہچاننا کہ وہ ہے کیا, وہ کہاں سے آیا ہے,
اس کی ایبلٹیز کیپیسٹی کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, اور اپنے سیلف اسرٹیو ہونا کیا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے. اور دوسرا جو بہت بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ فیلئر ٹو لانچ ایٹ دا رائٹ ٹائم. So anyhow, what I'm trying to say is کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور دی ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ کیپٹلائز کر سکتا ہے. اچھا, جب یہ ساری اتنی ساری شروع سے باتیں ہوتی رہی اور all the time I was thinking and thinking کہ اب میں یہ کر لوں, اب میں وہ کر لوں. انرجی بہت زیادہ تھی, سوچیں تھیں, ہمت بھی تھی, اسکلز تھیں, کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہت اسکلز دی تھی. شروع سے انہوں نے ہمیں اس طرح ایسے اسکولز بھیجا, کالجز گئے, اسکل سیکھی, مختلف ہر طرح کی اسکلز ہمارے پاس تھیں. تو کمی کیا تھی؟ کمی صرف یہ تھی کہ اپنے آپ کو کم سمجھنا, lack of assertiveness, lack of courage to launch. Yeah. So now where do I stand? Who am I? What do I want from life? So that was the moment of realization final. جس نے جب میں نے بات کی, اپنے آپ کو اوپن اپ کیا, ڈر کو ختم کیا. the fear of failure is actually the failure. It is not the failure. یہ نہیں کہ آپ فیل ہو گئے یا آپ نے چیز کی اور آپ وہ کمپلیٹلی کر نہیں پائے تو یہ فیلئر ہو گیا. نہیں, جو اس کا فیئر ہوتا ہے نا کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں, کہیں مجھے بیکلیش پہ نہ جانا پڑ جائے. کیونکہ ایک ٹرم ہوتی ہے ایسٹرونومی میں بھی, اس کو کہا جاتا ہے فوم اسٹرائکس. سو دے آر فوم اسٹرائکس, جو چھوٹے چھوٹے فومز ہوتے ہیں وہ اسٹرائک کرتے ہیں, مستقل اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اسپیس میں. اور جب تک کوئی بڑا ایکسپلوژن نہیں ہوتا یا کوئی بہت بڑا اسٹرائک نہیں ہوتا, تب تک ناسا بھی اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک نہیں کرتا, ریئیکٹ نہیں کرتا. سو دیز اسمال فرم اسٹرائکس they keep on happening, but how we come out of them and how we realize who we are actually make us or break us. So مجھے ہمیشہ اب پہلے بھی اور اب especially after like last 5-6 years when I stood up for myself, then I realized that my fear of failing was actually the cause of my failure. It wasn't کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. مجھے یہ جو فیئر تھا نا کہ یار اب لوگ کیا کہیں گے, اب میرا ہسبینڈ کیسے ریئیکٹ کرے گا, اب میرے ماں باپ اپنے کیسے ریئیکٹ کریں گے, اب بچے کیسے ریئیکٹ کریں گے. اور ایک ماں کو تو ہر وقت وہ گلٹ, وہ کہتے ہیں نا there is no mother without a guilt. تو اس کا بھی فیئر, اور اس میں ایک اور بہت اس میں ایک بہت میرے ساتھ میری جو سٹی اسکول میں جو میری ہیڈ تھیں, جو اس ایریا کی نارتھ ایریا کی ہیڈ ہیں, سو I heard about her story, how her son passed away. It was a suicidal attempt, and then there were number of such attempts, and mostly the root cause was supposed to be the mother, ki mother was not around. So that's how people kept یہ ہم ساری جو باتیں سنتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں بس جاتی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ بیسیکلی ماں ہے, بیوی ہے, بہن ہے, اسی کو ہر کچھ کو سمیٹ کے رکھنا ہے اور اس کو اپنے آپ کو بھی سمیٹ کے رکھنا ہے, کیونکہ جب اتنی چیزیں وہ سمیٹ رہی ہو تو وہ کچھ اور نہیں کر سکتی ہے. سو جب یہ سارا کچھ یہ جو تھی نا یہ فوم اسٹرائکس, جب
एक बिग फोम स्ट्राइक बनी और उसने मुझे एक्सप्लोड करके रख दिया. Then I said that is it, and now I'm going to do what I always wanted to do. And I've always wanted to paint. I I have a bachelor's degree. I did my pottery. I write, and I write pretty well, Sheikh Saab, nahi? So and I write for newspapers also. So some of you must have perhaps read my writing. Anyhow, what I am trying to say is, तो जब मैंने अपने आप को पा लिया ना, तो मैंने सब कुछ पा लिया. और फिर then everything started falling in line. Then I came out of the fear of failing. So और ये एतमाद भी मुझे अल्लाह से करीब होने की वजह से मिला. And he's my friend. And I talk to him about each and everything, and it's not just in namaz or prayer, but ये खुद एतमादी अब बढ़ती चली जा रही है because of that relationship with the Almighty, the Giver, the gift, the God. और ये इन सब चीज़ों से मेरी relationships बेहतर हुई. उसके बाद मेरी अम्मी से somehow or the other शायद माएँ अपनी बेटियों से बहुत expect करती हैं. So मेरी अम्मी से मेरी रिलेशनशिप, क्योंकि मैं दूसरे बिल्कुल बीच में आती हूँ और दूसरे नंबर की बेटी हूँ, तो हमेशा अम्मी की शायद मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि बड़ी वाली के साथ उनका लाड ज़्यादा था और उनकी दोस्ती ज़्यादा थी. तो उनके हर काम छोटे मोटे मैं किया करती थी. उनके साथ शॉपिंग करना, मेहमान आ गए तो उनके साथ सर्व करना, डिशेस क्या बनेंगी डिसाइड करना एंड ऑल दैट. और मेरी शादी के बाद ये सब कहीं गुम हो गया, क्योंकि मैं खुद भी नहीं रही उनके पास और कराची बहुत कम जाना होता था. फिर they shifted here, then I lost my father and all that. But जो कुछ मेरी अम्मी के साथ हो रहा था, जैसे सारे बच्चे बाहर चले गए, अब उनके पास एक ही बच्चा रह गया, और फिर उनके शौहर का इंतकाल हो गया जो उनको बहुत पैम्पर किया करते थे. सो वो और सारा जो उनका बैगेज था ना, वो भी मैंने बहुत सहा. लेकिन then I told अम्मी also, in this evolution which was constantly happening to me, and I said, okay, definitely I'm your child. I will always be there for you. आप जब कहेंगी मैं आऊँगी, आप को जब ज़रूरत होगी मैं आऊँगी. पर मुझे हर छोटी छोटी बात के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करें. मतलब कि मैंने बात नहीं की, मैं खामोश क्यों हूँ, मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम काम कर रही थी. मैंने कहा माँ, ये सारी चीज़ें आप ही कर चुकी हैं. घर की जो भी जिम्मेदारियाँ हैं या मेरा बटरकप्स है उसकी मेरी जिम्मेदारी है. You are there. मैं आपको in our kitchen, because प्लानिंग में ही हमने ऐसे किया कि किचन बहुत बड़ा बनाया और उसमें हमने वो पूरा ब्रेकफास्ट आयल और चेयर्स वगैरह रखी कि बिकॉज आई एम मोस्टली इन द किचन बिकॉज ऑफ माई बटरकप्स बिजनेस. तो वहाँ मैं उनको बिठा देती हूँ. अच्छा जी, इधर उधर की बातें होंगी, सारा हो गया. बट देन since I've changed and I don't want to cry anymore, I really do not want to think about the negatives which have happened in my life or in my mother's life. If she went through something like 40 years back, I'm not going to take a baggage of it. So I told her clearly, okay, if you want to move on and if you have happy thoughts and if there's a need or whatever, I'm there with you. But अगर आप वही बातें करेंगी और मुझे बैगेज देंगी तो मैं नहीं लूँगी. And मेरी उनसे भी रिलेशनशिप अब बेहतर हो गई, जबकि हमेशा थ्रू आउट मुझे ऐसा लगता था कि अम्मी मुझे समझ नहीं रही है. मुझे अम्मी नहीं समझ रही, एक्चुअली मैं खुद को नहीं समझ रही थी. मैं खुद को नहीं सर्च कर रही थी, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, और शायद पता था तो उसको मैं पीछे धकेल रही थी सबकी इमोशनल, सबकी फिजिकल नीड्स को पूरा करते करते. सो जब मैं खुद कंप्लीट होने के सिलसिले में आई तो मेरे आसपास के लोग भी कंप्लीट होना शुरू हो गए.
اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو, عورت ہو, مرد ہو, یونٹس ہو, ہر ایک انڈیویجول اگر اپنے آپ میں مکمل ہے یا اپنے آپ کو مکمل کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے, تو اس کی گیٹ جو ہے نا, دا whole environment, your atmosphere, your life plays around it, and then they also become a whole. So اب شیخ صاحب نے تو کافی انٹروڈکشن میرا کرا ہی دیا کہ میں اب کیا کیا کرتی ہوں, اور میں بہت مزے سے کرتی ہوں اور میں بہت خوشی سے کرتی ہوں. I am planning to launch my book shortly, جس کے لیے مجھے شیخ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وقت کبھی بھی ہماری طرف نہیں ہوتا, تو do it as soon as possible. Yes, I've been thinking about it for the past 2 years. Then again, a lot of ایک عورت کی سکسیس جو ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. ایک مرد کی سکسیس میں بہت لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. سو جو سکسیسفل عورتیں ہوتی ہیں, جو کریٹو عورتیں بھی ہوتی ہیں نا, ان کو بہت ساری اسٹرگلس خود کرنی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی جواب دہی بھی کرنی ہوتی ہے. سو میں اس پروسیس میں ہوں, اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ میری کتاب اس سردی کے موسم کے آنے تک انشاءاللہ ایڈیٹنگ اور پبلشنگ کے مراحل سے گزر جائے. اور کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجیے. نہیں, تھینک یو ویری مچ. باتوں باتوں میں شاید ریئلائز نہیں کیا ہم نے آلموسٹ 1 گھنٹہ ہونے کو ہے, اور اتنی دلچسپ بات کر رہی تھی, اور اسپیشلی جس ٹراما کی آپ نے بات کی, اس پرٹیکولر ایشو کی بات کی, مجھے خوشی ہوئی آج اس پہ کھل کی بات ہوئی ہے. I must confess کہ you are a very courageous woman, because ladies usually don't talk about these things ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ یہ جو پرٹیکولر ایشو ہے, جس طرح ساس بہو کا جو ریلیشن ہے, یا ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن ہے, ہسبینڈ کا ساتھ دینا, اور پھر sometimes you have to learn the art of saying no, and it's easier said than done. لیکن it was good to hear you کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ڈیلیکیٹ سبجیکٹ کو ہینڈل کیا اپنی لائف میں, اسپیشلی جب آپ نے بات کی کہ آپ کی بہن کی بھی خلا ہو چکی تھی, تو خدا نخواستہ یہ نوبت اللہ نہ کرے آپ کی بھی آ سکتی تھی. بہت ٹیکفلی آپ اس کو لے کے چلی, اور آپ نے ہم سے شیئر بھی کی چیزیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ویمن اگین ان سوسائٹی ڈو دیٹ. ایک کوئی پارٹنگ میسج دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو اپنے جو آپ کے فیلئرز ہیں اس حوالے سے, کہ بفور وی کلوز واٹ ول بی یور لاسٹ میسج ٹو یور ویورز؟ میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں شیخ صاحب, بور ہی نہ ہو گئے ہو سب. میسج تو میرا, ہمارے ایک سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر سعید الزما صاحب, اگر آپ کو یاد ہو تو, وہ کہا کرتے تھے لیٹ یور سیلف ہیپن. سو مائی میسج از دا سیم. اگر آپ سوچیں تو اس میں اتنا کچھ پنہا ہے. لیٹ یور سیلف ہیپن. Exactly. Let it happen naturally. Let's let nature take And its let yourself, don't hold yourself back. Let it happen. If you think you can do something, if you have potential, let it happen. Don't stop yourself. Don't pull yourself back. And naturally see how things evolve around you. Wonderful. It was a pleasure talking to you. Thank you so much for taking out the time. And I hope کہ جو لائیو سن رہے ہیں انہوں نے اس سے سیکھا ہوگا, اور جب یہ بعد میں بھی لیجر اینڈ پلیجر جب لوگ دیکھیں گے فیس بک پہ, بعد میں جب یہ ٹرانسپورٹ ہوگا یوٹیوب پہ, آئی ہوپ کہ اس میں اچھے لرننگ میسیجز ہوں گے لوگوں کے لیے, اچھی لرننگز ہوں. تھینک یو سو میں نے ویری بول مچ. تو سب کچھ کیا. سوری, میں کہہ رہی تھی میں نے کافی کچھ بول دیا ہے. امید ہے اس کو پازیٹیولی ہی لیا جائے گا, اور میں نے یہ سب کچھ شیئر بھی اسی لیے کیا کہ بہت سے لوگ, بہت سے خاندان, بہت سی عورتیں, بہت سے مرد بھی, ایون I mean I'm not saying that it's always the woman who suffers. بہت سے مرد بھی جو who fail to launch themselves actually fail. But people who stop fearing and stop stop themselves from happening,
actually they are losers, not the people who let happen and assert themselves and do what they want to do. So, success to you all, and stay blessed. Thank you so very much. You take care of yourself. Allah Hafiz. That's it.